प्रेस। हॉर्न प्रेस में क्या होता है, ये दिस वन इज द हॉर्न। हॉर्न क्या है, बेसिकली इट इज ए हैवी शाफ्ट विच इज प्रोजेक्टेड आउट, जो फ्रेम के अंदर से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट होता है। सो दिस वन इज नोन एज द हॉर्न। बेसिकली ये किस लिए करते हैं, बेसिकली इट इज यूज्ड टू support the cylindrical, to accommodate, yes, to support the cylindrical jobs. A heavy shaft projecting out from the machine frame is known as the horn. It is used for accommodating the cylindrical work. The horn may be changeable. इस हॉर्न को आप चेंज भी कर सकते हो, जो हैवी शाफ्ट है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द वर्क। और ये जनरली हम कहाँ यूज करते हैं, दिस प्रोसेस इज जनरली यूज्ड फॉर फ्लैंजिंग एजेस, एम्बोजिंग प्रोसेस के लिए, सीमिंग प्रोसेस के लिए, पंचिंग के लिए एंड द अदर ऑपरेशन। पंचिंग, स्टैंपिंग, embossing, so for these operations we use the horn press. Horn press में क्या होता है, a heavy shaft which is projecting out from the frame to accommodate the cylindrical, work, or to support the cylindrical jobs, and these horns are having the different shapes that can be changeable, so you can fit the another horn of the different size which can be fitted in the frame, that is according to the work requirement. So next one is the arch press. Arch press देख रहे हो, arch press क्या है, एक इसकी शेप भी आर्च की तरह है, नीचे से वाइडर है और ऊपर से क्या है, नैरो है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, this one is known as the arch press. The space available for accommodating the work looks like an arch. The wider, जो नीचे वाला पार्ट है, wider the lower part and narrow the upper part of the frame permits the working of the large sheet metal. So this press is used for, generally हम ये किस लिए करते हैं, ब्लैंकिंग करने के लिए, कोई भी पीस को कट करना है, बड़ी शीट को कट करना है, ब्लैंकिंग के लिए करते हैं, बेंडिंग के लिए करते हैं, ट्रिमिंग ऑपरेशन के लिए करते हैं, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द किचन वेयर्स, लार्ज केन्स, फॉर्मिंग ऑफ द शॉवल्स और एम्बोजिंग प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं। सो दिस वन इज नोन एज द आर्च प्रेस। A space available for accommodating the work look like an arch. The wider the lower part and the narrow the upper part of the frame permits the work of larger area sheet metal. This press is used for blanking के लिए यूज करते हैं, बेंडिंग के लिए यूज करते हैं, ट्रिमिंग के लिए यूज करते हैं। जनरली का यूज करते हैं in manufacturing the kitchenware utensils, large size of the canes, shovels बनाने के लिए, and embossing the latter on the metal panels. Next one is straight side press. Straight side press के अंदर क्या दिए हुए हैं, कि दो rigid frame दिए हुए हैं. These are the two vertical rigid side frames are mounted on the two side of the base. ये base के दोनों तरफ क्या दिए हुए हैं, दो frame दिए हुए हैं. So basically two sides of the base to increase the rigidity and the straight strength of the frame. The machine is prepared for, जनरली ये कहाँ यूज करते हैं, heavy work के लिए यूज करते हैं. In this single crank is जनरली, सिंगल क्रैंक हम किस लिए यूज करते हैं, और स्मॉल प्रेसेस के लिए यूज करते हैं, और जो डबल क्रैंक है उसके अंदर और द हैवी वर्क और द लार्ज प्रेस के लिए हम यूज करते हैं. नीडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑन द स्लाइड यूनिफॉर्मली. सो स्ट्रेट साइड प्रेस may be used for forming the
heavy gauge material, press forging, deep drying, and the coining operation. This one is known as the straight side press. In the straight side press, there are two vertical rigid side frame which are mounted on the two side of the base to increase the rigidity and the straight strength of the frame. The machine is prepared for the heavy works. In this, the single crank and the double crank mechanism both are both can be accommodated in a single frame. It is used for the small press, and the double crank system it is used for the heavy works need to distribute the load on the slide uniformly. So these presses are generally used for forming of the high gauge material. हाई गेज का मतलब थिक उसके थिक मटेरियल के लिए press forging, deep drying operation. Next one is the pillar press. पिलर प्रेस में क्या होता है, बेड के चारों तरफ एक एक पिलर प्रोवाइड किया होता है. So there are total 4 pillars. It is driven mostly by the hydraulic pressure, and this type of the press is very rigid with high tonnage pressure among the press group. So it has the 4 pillars mounted on the base which are supporting and guiding the ramp. So generally ये कहाँ यूज करते हैं? These types of the machines are also used for the heavy works. These are used for the heavy works. So in this, the 4 pillars on the 4 sides of the base are provided. So this type of the press is very rigid with the high tonnage pressure among the press group. Next one is the types of the presses according to the number of the action. One is the single action, then double action, and the triple action. So number of action means the number of the ramps on the press in the function. In the single action press, it is having only the one ramp और slide बोल देते हैं इसको, जो मूव करता है. रैम भी ऊपर नीचे मूव करता है तो इसलिए हम उसको स्लाइड भी बोल देते हैं. Whereas the 2 ramps or the slides in the double action and the 3 ramps or the slide in the triple action presses. So in the double action presses has the 2 slides or the ramps. One is an inner slide which carries the punch and the outer slide which carries the blank holder for the drying operation. एक नीचे रैम लगा होता है और एक ऊपर लगा होता है. एक के ऊपर हम ब्लैंक को रख देते हैं और एक के ऊपर हम क्या रख देते हैं, पंच को रख देते हैं. So this one is known as a double action press. Has the 2 rams, an inner ram slide, an inner slide carries the punch and the outer slide carries the blank holder for the drying operation. So triple action press is similar to the double action press with the addition of a third ram which is placed in the press bed. The descending of the inner outer slides and ascending of the third slides are properly synchronized for the triple action for drying, re-drying and the forming operation. Next one is the types of the presses according to the power transmitting arrangement, that is from source to power. In this, first one is the crank press. So here this one is the crank press. So the most crank press में क्या है? One is the flywheel, clutch, crankshaft, connecting rod, bearing, then crank and the ram.
this one is the crank, this one is the here the two are the bearing, so this one is the crankshaft, this one is the ram, this one is the connecting rod, and this one is the clutch, and this one is the flywheel, and here the motor is attached. Here the motor is attached. So the most common and the simplest drive is the, इसके अंदर हम जनरली क्या लेते हैं, सिंगल क्रैंक मैकेनिज्म लगा देते हैं, सिंगल क्रैंक एंड द कनेक्टिंग रोड मैकेनिज्म. In this mechanism, the crankshaft is being rotated. जो crankshaft है, that is being rotated by engaging the clutch with the driving wheel. The driving wheel gets the power from the motor, which is attached with the help of the belt. With the help of the belt, the rotary motion of the crankshaft and the crank transforms the rotary motion of the crankshaft and the crank transform the reciprocating motion of the ram approaching simple harmonic motion. This one is ये जैसे हो रहा है simple ऊपर नीचे simple harmonic motion, and most presses operation occur near the middle of the stroke because at the middle of stroke the ram is having the maximum velocity. Ram is having the maximum velocity. So this one is known as the crank presses, in which the single crank connecting rod mechanisms are attached. Now second one is the eccentric press. Eccentric press के अंदर क्या है? This mechanism is used where the shortest stroke length of the ram is required. जब आपको shortest length चाहिए रैम की, तो वहां पर हम क्या यूज कर देते हैं? We use the eccentric presses. We use the eccentric presses. Here this one is the flywheel and the clutch. Here is the eccentricity, ये eccentric and the ram. जब आपको रैम का shortest distance चाहिए, तब हम क्या यूज करते हैं? Then we use the eccentric press. This mechanism is used where the shorter length of the ram is required. The motion is similar to that of the crank mechanism, but having the greater rigidity and less tendency for the deflection. So eccentric presses कहाँ यूज करते हैं? जहां पर आपको shorter stroke length की requirement है for the movement of the ram. Next one is the rack and pinion. Rack and pinion कहाँ यूज करते हैं? जहां आपको longer stroke length की requirement है या longer movement of the ram की requirement है, तो वहां हम क्या यूज करते हैं? Rack and pinion यूज करते हैं. Here this one is the rack and this one is the pinion, और rack के ऊपर क्या अटैच किया हुआ है? ram अटैच किया हुआ है. So this mechanism is used where a very long stroke length of the ram is required. The movement of the slide is much slower and uniform. So ये जनरली कहाँ यूज करते हैं? Arbor press में यूज करते हैं. Arbor press is the one example of the this rack and pinion type presses. Rack and pinion type presses. Next one is the hydraulic press. Hydraulic press में क्या होता है? एक इनलेट वाल्व और एक आउटलेट वाल्व फॉर द फ्लो ऑफ द ऑयल, और इधर एक क्या लगा होता है? सिलेंडर, and the piston moves up and down, connecting rod and this ram. So this drive is widely used, especially where the high pressure and the low speeds are required for forming, for deep drying and for pressing operation. तो hydraulic press हम कहाँ यूज करते हैं? Hydraulic press is used where the high pressure and the low speed is required. Where the high pressure and low speed is required. For example, the operations are forming, deep drying, pressing operation. So there we use the hydraulic presses. Here the diagram is shown for the hydraulic press. Next one is the cam press. Cam press कहाँ यूज करते हैं? जहाँ जब रैम नीचे आ जाता है
तो वहां पर उसको कुछ टाइम के लिए रिटेन करने के लिए फॉर अप्लाइंग द मोर प्रेशर वहां हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द कैम प्रेस, वी यूज द कैम प्रेस. This mechanism is used where the some special movement of the ram is desired, in which the ram will remain ideal at the bottom of the stroke for some time. जब रैम नीचे आ जाता है on the workpiece, so it retains there for some time. That is in the ideal condition. So we use the this type of the, that is the cam type of the rams are used. Next one is the toggle press. Next one is the toggle press. This press is mostly suitable in the these are generally the double acting press used in the double acting press, action press, in which the outer slide which hold the blank और जो inner slide है वो किसको ब्लॉक करता है, होल्ड करता है, पंच को करता है on a drying operation. Earlier I have discussed about the double action. Double action में क्या होता है, जो आपका आउटर स्लाइड जो आउटर रैम होता है वो ब्लैंक को होल्ड करता है और जो इनर वाला रैम है वो किसको करता है होल्ड, दैट इज पंच को करता है. the double action that is the inner one is which inner one किसको करता है, पंच को करता है, और आउटर वन किसको करता है, ब्लैंक होल्डर को करता है. सेम इज इन दिस वन, द इनर पंच को करता है और जो आउटर है वो ब्लैंक को करता है. दिस वन इज द नकल प्रेस. दिस वन इज द नकल प्रेस. जब आपको हैवी लोड अप्लाई करना है तो वो यूज है, इसके अंदर नकल ज्वाइंट हम यूज करते हैं. सो दिस मैकेनिज्म इज very much used due to its high mechanical advantage and the high loading capacity for sizing and the coining operation. For sizing and the coining operation. तो इनको हम क्या बोल देते हैं, in which the knuckle joint mechanism is attached. Next one is the power screw. Power screw में क्या है, in this type on the downward stroke जब of the ram is accelerated by means of the frictional disc engaging in the flywheel. The workpiece absorbs the entire amount of the stored energy at the bottom of the stroke, and this drive is suitable for the in operating the drop hammering, जिसमें हम एकदम सडनली रैम को या हैमर को हम सडनली ड्रॉप कर देते हैं. सो दिस वन इज नोन एज द पावर स्क्रू प्रेसेस. दीज आर नोन एज द पावर स्क्रू presses. In this type of the drive, the downward stroke, the ram is accelerated. The ram क्या हो जाता है, it is accelerated by means of the frictional disc and engaging the flywheel. एकदम क्या करता है, रैम डाउनवर्ड मूव कर देता है, सडनली एकदम ड्रॉप हो जाता है. तो उससे क्या होता है, द वर्कपीस एब्जॉर्ब्स द एंटायर अमाउंट ऑफ द स्टोर एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द स्टोव, एंड दिस ड्राइव इज सुटेबल इन ऑपरेटिंग द ड्रॉप हैमरिंग ऑपरेशन या ड्रॉप फोर्जिंग भी बोल देते हैं इसको. सो दीज आर नोन एज द पावर स्क्रू presses. These are known as the power screw presses. So that's all about today's lecture. In next lecture, we will discuss about the different types of the press operation. What is the shear operation क्या होता है, blanking operation क्या होता है, bending operation, what is the forming operation, drying operation, embossing operation, coining, trimming, and the latching operation and the notching operation. So these are the different operations which are done, which are performed with the help of the different types of the presses. And after that we will discuss about the die. What is the die? Die क्या होती है? What is
And the two types, what is the die clearance, what are the press accessories, पायलट क्या होता है, स्ट्रिपर क्या होता है, नॉकआउट क्या होते हैं, what are the pressure pad क्या होते हैं, and then the two types of the dies, what is the compound die क्या होती है, and the progressive die क्या होती है. And after that we will discuss about the drilling and the turning dynamiters. Then this chapter will be completed. So in the next two lecture we will complete this chapter. Any query beta?